इस क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दिया गया है रो ऑफ आर क्या होता है, रो ऑफ आर होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके। एंड आर, आर जनरली क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस एट विच वी आर मेजरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, विच वी आर मेजरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो इन दोनों का ग्राफ दिया गया है एंड हमसे बोल रहा है वो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस ऑब्जर्व टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इम्प्लाइज ए की वैल्यू अपनी क्या होगी, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। और जो ई होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वो न्यूक्लियस के अंदर कैसे लिखी जाएगी, ये न्यूक्लियस है, इसके सेंटर पर मान लिया जो ये चार्ज कंटेन कर रहा है वो क्यू है, ओके। ये क्यू चार्ज सेंटर पर होगा, जरूरी नहीं है क्योंकि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो वेरी कर रही है, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो जो क्यू चार्ज होगा, क्यू चार्ज को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए सिंस इसकी हमें क्या दी गई है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो ऑफ आर दिया गया है, तो हम क्या कर लें, एक आर डिस्टेंस पर यहाँ से एक डी आर थिकनेस का सरफेस सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। तो ये आर डिस्टेंस पर मैंने डी आर थिकनेस का एक सरफेस सेलेक्ट कर लिया, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, ओके। थिकनेस डी आर है तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 4 पाई r स्क्वायर डी आर। एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो ऑफ आर दी गई है, तो जो चार्ज कंटेन करेगा न्यूक्लियस वो कितना मिल जाएगा हमें, 4 पाई r स्क्वायर डी आर रो ऑफ आर। तो ये क्या है, डी क्यू चार्ज जो इससे कंटेंट होगा। पूरे स्फीयर के निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। आर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से कैपिटल आर तक जो रेडियस है इसकी, जीरो टू कैपिटल आर, ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर डी आर इंटू रो ऑफ आर, ओके। तो जो यहाँ पे ये आ गया अपना चार्ज, ओके, इसको हम नोट कर लेते हैं, यहाँ पे गौर करना आप लोग। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आप सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यदि क्यू चार्ज के ड्यू टू हमें आर डिस्टेंस पर फाइंड करनी है तो होती है के क्यू आई आर स्क्वायर, ओके ना। अब वो क्या बोल रहा है, अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अपना जो क्यू होना चाहिए वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, आर क्यूब के। तभी तो आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर बचेगा। तो अपना जो यहाँ से क्यू आ जाएगा, ये आर क्यूब कब आएगा, जब रो ऑफ आर कांस्टेंट रहेगा। ये आर क्यूब कब आएगा, क्योंकि आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये आर क्यूब बाई 3 आ जाएगा, कब, जब रो ऑफ आर कांस्टेंट रहेगा, रो ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और कहाँ तक रहेगा, सिंस इस स्फीयर की हमने रेडियस क्या मानी थी, कैपिटल आर, टोटल रेडियस हमने मानी थी कैपिटल आर, तो जो रो ऑफ आर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए कैपिटल आर तक, गाइस समझ रहे हो आप। तो इसके बाद हमें ग्राफ में दिया गया था कि रो ऑफ आर एस कांस्टेंट है कहाँ तक है, ए तक, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। तो दिस विल बी अवर आंसर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट। थैंक यू। The given question is four charges Q1, Q2, Q3 and Q4 of same magnitude are fixed along the x-axis at x equals to minus 2a, minus a, plus a and plus 2a respectively. Okay, so as we can see from the figure, we are having four charges Q1, Q2, Q3 and Q4 of same magnitude and are placed at minus 2a, minus a, plus a and plus 2a on the x-axis. A positive charge Q is placed on the positive y-axis at a distance b greater than 0. Four options of signs of these charges are given in the list 1. The direction of forces on the charge q is given in list 2. We have to match list 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below in the. So in the list 1 we are having the signs of the charges. Okay, so it is q1, q2, q3 and q4 all are positive. And similarly in list 2 we are having the direction of the net force acting on this small charge q. Okay, so this is positive x, positive minus x, plus y and minus y axis. So let's go one by one. We have in P all the four charges q1, q2, q3 and q4 are being positive in nature. So now also we are given that this small q charge is positive. So let me draw this. This is plus q charge. Okay, it is being placed here and we are having this are this is as the x-axis. Okay, and four charges are being placed. Okay, so
this is Q2, this is Q1, this is Q3, and this is Q4. Okay, so this is Q4 here. So see now all the four charges are positive in first part, so they will exert a force on positive Q also, like they will repel each other. Okay, so if I draw the force acting on the plus Q charge, so we have here due to Q1 on plus Q charge there will be a repulsive force. Okay, let me remove it from here, and then I'm just drawing the forces. So from Q1 there will be a, let's say, F1 force acting. Okay, due to Q2 there will be a F2 force will act in this direction. Due to Q3 there will be a F3 force acting in this direction. This is F3, and due to Q4 we will have a force F4 acting. Okay, and these all four will be repulsive in nature. So now I have drawn F2 and F3 of greater magnitude because Q2 and Q3 are placed near to the positive Q charge. Okay, so as the distance is less, so the magnitude of force will be more. Now see, the forces F1 and F4 will be having same magnitude, but their direction are in shown in the figure. So if I draw the components of F1 and F4, so their x component will cancel out each other, right? And similarly for F2 and F3, their component in the horizontal direction will cancel out each other due to symmetricity. And the component of the force of the net force will be acting only in the y-axis, right? So this will be the direction of the F net force. So due to symmetricity, this net force will be acting in the y direction only. So we can say that for P option we are having plus y. So this is for P option. Next we have, let me clear the figure. Okay, so for the next part we are having Q1 and Q2 are being in positive in nature, Q3 and Q4 are being negative in nature. So we have Q1 and Q2 are positive, so force will be similar due to them in the previous case. This is F2 and this is F1. But as Q3 and Q4 are negative, they will tend to attract this small Q charge towards themselves. So Q3 will attract with some force, this is F3, and Q4 will attract with some force, this is F4. So again, as we can see from the figure, the y component of these forces of F1 and F4 will cancel out each other, and similarly the y component of F2 and F3 force will cancel out each other, and the net force will be acting in the positive x direction only, okay, due to the symmetricity of the forces. So for Q part we are having the answer as positive x. So this is for the Q part. Okay, so let me rub it again and make it for next part. So for the part C, we are having Q1 and Q4 as positive and Q3 and Q2 and Q3 as negative. So this Q1 and Q4 will apply a repulsive force on the small q charge. So it will be like this only. Q1 will be rep repelling the small charge q by a force F1. Okay. Q2 will be attracting. Q2 will be attracting it. Okay, see here the force F1 will be of smaller magnitude. Okay, this will be of smaller magnitude. This is F1. This is F2, and Q3 is again negative, so Q3 will be like this, and Q4 is positive, so it will repel. Okay, like this. So here see, we can see the x component of F1 and F4 will cancel out each other, and there will be a net force due to F1 and F4 in the positive y direction. And for F2 and F3, their x component will also cancel out each other, and the net force of F2 and F3 will be acting in the downward direction. So now we can see that these two net forces, we are having the maximum force acting in the negative y direction. So resultant of these two forces will be acting in the downward direction only. Okay, so net force will be in this direction. So we can say that for part R, we are having minus y axis. Okay, so this is minus y, this is our part. And for the last part, it is this. Okay, so this was the plus q charge here.
placed here. And now we are having in the part S Q1 and Q3 are positive and Q2 and Q4 are negative. So Q1 is positive, so we will have a force F1 in this direction. Q3 is positive, so Q3 is positive, so it will repel in this direction. This is F3. Q2 is negative, so it will attract the plus Q charge in this direction with the force F2, and Q4 is negative, so Q4 will attract like this, okay, with the force F4. Now again, due to the symmetricity, the components of F1 and F4 in the y direction will cancel out each other, and we will have a resultant in the x direction due to F1 and F4, and similarly we will have a resultant force due to F2 and F3 in the negative x direction, okay, with a greater magnitude. And now again we can see from the figure that this resultant, the maximum is in negative x direction, so the resultant of these two vectors will be in the negative x direction. So we can say for part S we will be having the resultant force acting in negative x direction. So the correct option will be P3 Q1 R4 and S2. And from the given options A, B, C and D, option A will be the correct answer. Thank you.